introduction. His Holiness Jaya Swami Maharaj, disciple of His Divine Grace, has served as an editor or assistant editor for nearly all the books of Srila Prabhupada which we have been reading. So we are very, very, the gift which we have received of Srila Prabhupada, which has come through Maharaj. From Srila Prabhupada in the year of 1968, beginning of this con time, 1968. And afterwards, Maharaj has been serving in a different capacity in different ways. As I mentioned about the books, so he has been either assistant editor or editor for so many, almost all the books of Srila Prabhupada. And he has lectured extensively at colleges and universities, especially in the United States. And in 1978, Maharaj accepted the order of a renounced life of sannyas, which is the highest order of renunciation. And then 1985 to 1986, Maharaj spent a year and a half traveling with a party of pilgrims on Padyatra. तो महाराज उसमें पदयात्रा में काफी स्थानों पर भारतवर्ष में भ्रमण किए और 1987 1987 परम पूजनीय धर्मदूत स्वामी महाराज एंड हिज ग्रेस भुजन प्रभु के साथ में मिलकर के महाराज ने वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन उसकी संस्थापना की. And from 1988 till 2017, he served as a director of Srila Prabhupada's publishing house, the Bhaktivedanta Book Trust, BBT. And 91 through most of 1998, he served as editor-in-chief of Back to Godhead magazine, जिसको हम लोग हिंदी में भगवत दर्शन के नाम से भी जानते हैं, for which he had been an assistant editor for several years. And from 2008 till 18, he served as a director of the Bhaktivedanta Archives, the official repository for historical records of Srila Prabhupada's life and work. And he also served as the senior editor of a 3-volume translation and commentary, which is the Sri Brihad Bhagavatamrita, a 16th century Sanskrit philosophical and devotional work by Sri Sanatana Pad Goswami. And he is also author of several books like Vanity Karmas and The Meaning of Life, like this. And Maharaj also, apart from this, he travels extensively, and I have a whole list of countries. It's almost the entire globe, actually. More than 60 countries, like Argentina, Austria, Australia, Bahrain, Italy. Some of these countries are like this. Ukraine, United Arab Emirates, Kingdom, Venezuela, Philippines, and of course, Canada, Kuwait. So we are very, very fortunate and very, very grateful to Maharaj. In spite of his very busy schedule, Maharaj could accommodate our request. And he is giving association to all of us on this very auspicious day. So let's welcome Maharaj warmly, enthusiastically, with respectful mood by chanting one time Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Maharaj. Over to you, Maharaj. Thank you, Bhaktandabat, Braj Prakash Prabhu. Do we do kirtan to begin? Yes, Maharaj. If you wish, Maharaj, you can do, Maharaj. Yes, everything kirtan. I guess just me, but I'll do it. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha
Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Chashodanandana Prajajana Ranjana Chashodanandana Prajajana Ranjana Chamuna Tira Vanachari Chamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunjavi Adi Jai Om Vishnupad Puruman Supari Prajakacharya Ashtotar Shri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Nama Charja Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Sabaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitha Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopinath Sham Kund Radha Kunikidi Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande Hari Hari Gaur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurn Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Pistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tathati Shapadantikam Pandehang Shri Guru Shri Jatapata Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Stam Savivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vansha Kolpatarubhyascha Kripa Sindho Pyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitha Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So we'll speak today from Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9. And how do you want to handle the Anuvad, Raj Prakash Prabhu? Maharaj, with the permission, I'll translate line by line, Maharaj. तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से पढ़ेंगे. When I first came to ISKCON, or when I first met Prabhupada 2 months after joining ISKCON, he came to New York and he was speaking on Prahlad Charitra. जब मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आया तो श्री प्रभुपाद जी आए थे न्यूयॉर्क में 2 महीने के पश्चात और वो प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे थे. Yes, and the topics were very attractive. और जो विषय वस्तु था वो बहुत आकर्षक था. In those days, there was a big movement of alienation from the established authorities of America among the young people. तो उस समय जो उनके अंदर अमेरिका की जो स्थापित जो मर्यादा थी उससे हट करके जीवन जीने की शैली अपना रहे थे. So Prahlad Maharaj, speaking against the powerful ruler, his father Hiranyakashipu, was a perfect hero for us. और उस समय प्रहलाद महाराज वो अपने जो शासक है हिरण्यकश्यपु उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं और वो एक बिल्कुल आदर्श शासक थे हम लोग के लिए उस समय अमेरिका में. He wasn't afraid to speak the truth as it is, even to the most powerful king. और वो बिल्कुल भयभीत नहीं थे सत्य बोलने के लिए उनके समक्ष जो कि बहुत शक्तिशाली राजा थे. So in Prahlad Maharaj's story, there are many instructive portions. Everything is instructive, but in particular, he instructs his class friends. तो महाराज की जो सारी कथाएं हैं वो सब ही बहुत ही उपदेशमयी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो उनके साथ में जो मित्र थे. He gives them instructions about spiritual life. He tells them what he learned in the womb from Narad Muni. तो वो उनको ये बताते हैं कि किस प्रकार से वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में उपदेश देते हैं और अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि से क्या शिक्षा ग्रहण की वो बताते हैं. Later, he speaks on Bhagavad Dharma even to his father. और बाद में तत्पश्चात वो अपने पिता के धर्म के बारे में बताते हैं. So now, Lord Nrsingadev has appeared and killed Hiranyakashipu. तो अब नरसिंहदेव भगवान प्रकट और हिरण्यकशिपु का वध. Despite the benedictions by which Hiranyakashipu thought that he could be immortal, Nrsingadev appeared in a wonderful form and vanquished him. इसके बजाय कि उनको सारे वरदान प्राप्त हुए थे, उनको जो अमर हो चुके हैं नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर के और उनका वध करते हैं. And after that, Lord Nrsingadev was furiously angry. और उसके पश्चात नरसिंहदेव भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित थे. This demon has tortured my devotee. Lord Nrsingadev could not be pacified. कि ये असुर जो है वो मेरे भक्त को ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं और वो शांत नहीं हो रहे थे. All the demigods offered beautiful prayers to the Lord. सभी देवतागण आकर के बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को. Lord Brahma, Lord Shiva, so many, all the demigods offered
beautiful Sanskrit prayers to the Supreme Personality of God. तो ब्रह्मदेव, शिव जी और सभी देवतागण आकर के लगभग वो बहुत सुंदर संस्कृत में प्रार्थना. But the Lord was still angry, roaring, fearsome. लेकिन भगवान फिर भी वो दहाड़ रहे थे और बहुत भयभीत लग रहा था और बहुत वो तेज से गुर्रा रहे थे. So finally, the Brahma nudged Prahlad forward. The Lord has appeared for your sake, so you please try to satisfy him. और अंततः ब्रह्मदेव वो प्रहलाद महाराज के पास आके कहते हैं कि आप आगे जाइए क्योंकि आपकी वजह से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं, आप जाके. So the Prahlad fell at the lotus feet of the Lord, and the Lord was pleased. Partly everyone is pleased by children, but more important, Prahlad was a perfect devotee of the Lord. तो प्रहलाद महाराज आगे जाके वहां पर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं. साधारणतः सभी लोग बच्चों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि एक शुद्ध भक्त है इसलिए भगवान. So the Lord placed his lotus hand on Prahlad's head, and Prahlad began to speak. और तब भगवान नरसिंहदेव ने अपने कमल रूपी हस्तों को प्रहलाद महाराज के मस्तक पर रखा और प्रहलाद महाराज ने बोलना किया. Sri Parad Uvacha Brahmadaya Suragana Muniyo Tasitha Satvaikatana Gatayo Vachasam Vasanta Prabhu, I'm getting some distracted sound. Same thing happening with you also, Vasanta Prabhu? Yes. Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, the internet is slow, Prabhuji. Okay. Sorry, Maharaj, we lost you, Maharaj, in between. There's some disturbance, Maharaj. Okay, now it should be all right, correct? Yes, Maharaj. Now we can hear, Maharaj. Hello? Yes, Maharaj, we can hear now. Yes, Maharaj. Now we can hear, Maharaj. Okay. If this goes Yes, on. Maharaj, we can hear now. Okay. So all these demigods have offered their beautiful prayers. What can I do? I'm so disqualified. Ugra Jate. I'm born in a nasty family, the family of Hiranyakashipu. So in this way, he thinks that I'm not at all qualified. वो कहते हैं कि अभी देवताओं गण ने आकर के प्रार्थनाएं की हैं और मैं एक असुर कुल तो मैं कैसे आपको पसंद कर पाऊंगा. Braj Prakash Prabhuji, Hare Krishna. Let me do one thing. I'm going to switch to a different device. Give me a moment.
Recording in progress. Okay, you can hear me now, yes? Yes, Maharaj. Clear, Maharaj. Okay. So, good. We're using a different device. This should be all right. So I'm most unqualified. Manye tanabhijana rupa tapashrutaujas teja prabhava bala paurusha buddhi yoga naradhanaya hi bhavanti parasya pungso bhaktya tutosha bhagavan gajayutapaya. Prahlad says that no amount of material qualification will serve to satisfy the Lord. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कितनी भी भौतिक उपलब्धि न हो जाए, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है. Dhana, no. Aristocratic family, abhijana, no. Rupa, no. Tapa, no. Shruta, Vedic knowledge, no. Oja, sensory power, no. Teja, the effulgent, bodily effulgence. Prabhaha, power, influence. Bala, bodily strength. Paurusha, diligence. Buddhi, yoga, mystic power. Na aradhanaya. None of these will satisfy the personality of Godhead. वो कहते हैं कि धन नहीं, अच्छे परिवार में जन्म नहीं, या फिर अपने जो इंद्रियों की शक्ति है, रूप, शारीरिक बल, तप, योग, ये सब से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं. Bhaktya tutosha bhagavan. But the Lord can be satisfied bhaktya, simply by devotional service. Bhaktya mam abhijanati. किंतु भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं केवल भक्ति करने से. Bhaktya tutosha bhagavan gajayutapaya. There was one elephant, he wasn't even a human being, but because he approached the Lord by devotional service, the Lord was satisfied. तो कह रहे हैं कि देखिए एक हाथी थे और वो तो मनुष्य भी नहीं थे, लेकिन वो भगवान के पास उनके चरण कमलों की ओर बढ़े भक्ति की तरफ से, और भगवान उनसे प्रसन्न हो गए. So if even an animal could satisfy the Lord, then all right, let me try. तो जब एक पशु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ. Prahlad didn't think, oh, all the demigods have offered their prayers. They've failed. Now let me show what I can do. No, he was very humble and meek. तो प्रहलाद महाराज ने ये सोचा कि देखिए सभी देवतागण आए और वो प्रयास में सफल नहीं हुए, अब प्रयास मैं करता हूँ. ऐसा नहीं सोचे वो बहुत विनम्र पूर्वक सोचते हैं कि नहीं, पशु से तुलना करते हैं. Then Prahlad says, Viprad Vishad Gunayutad Aravinda Nabhapad Aravinda Vimukhat Swapacham Varishtam Manye Tadarpata Mano Vachane Hitartha Pranam Nati Sakulam Natu Burimana. This is an important verse quoted often by Srila Prabhupada. तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्री प्रभुपाद जी ने कई बार इसको उच्चारण किया है. That one may have, one may be a Brahmin, Vipra, and Dvishat Guna Yuta. Dvishat, 2 times 6. He may have
all 12 good qualities, Brahminical qualities. But Vimukad, if he's not a devotee, then Swapacham, a dog eater, a person from the lowest family, is superior. If he has surrendered tad arpita, mana, vachana, ihita, artha, pranam, he's offered his life, his wealth, his energy, his words, his mind, his everything to the lotus feet of the Lord. So I think he's more glorious than even the most qualified Brahmin. तो वो कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण हो जो कि द्विशत मतलब 2 बार 6 अर्थात 12 गुणों में संपन्न हो, अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो उनके बजाय अगर स्वपच कोई है, कोई चांडाल भी है, और लेकिन उन्होंने अपने मन, अपनी वाणी, अपने कर्म, अपनी जो उनके पास जो धन है, संपत्ति है, वो सबसे अगर वो भगवान की सेवा में युक्त हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं. When we find in Chaitanya Charitamrita that when Advaitha Charja was performing the Shraddha ceremony and he offered the first plate, Shraddha Patra, to Haridas Thakur, he confirmed the fitness of doing so with reference to this verse, among others. तो चैतन्य चरितामृत में हम श्रवण करते हैं किस प्रकार से जब अद्वैत आचार्य जी वो श्राद्ध कर रहे थे और उस समय उनको ब्राह्मणों को भोज कराना था, तो सबसे पहले वो हरदास ठाकुर को प्रसाद सेवन कराते हैं, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे जाति से, लेकिन वो इसी श्लोक, वो कई श्लोक में से एक ये श्लोक है जिसको वो रेफरेंस में बताते हैं कि कैसे भगवान के भक्त श्रेष्ठ होते हैं. The punati sa kulam natu buddhimana. The humble devotee who's dedicated to the Lord, even if he comes from a very low birth, can purify his whole family. तो अगर कोई विनम्र भक्त हैं, चाहे वो नीची जाति से आ रहे हो, तो भी वो अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकते हैं. Not the buddhimana, not a person who's puffed up, buddhimana, who thinks a lot of himself. He can't even purify himself. और दूसरी ओर जो बहुत अपने आप को गर्वित, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो तो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकते. Very important verse. We're trying to spread Krishna consciousness all over the world. And here's evidence that yes, even the people from any low country, any low race, can become better than the highly qualified Brahmins by Krishna consciousness. तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कृष्ण भानुभावित का प्रचार प्रसार करने के लिए. जैसे सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं किस प्रकार से किसी भी इस प्रकार की नीची जाति में कोई अगर जन्म लिए हो नीचे स्थान पर भी, लेकिन ऐसे गुणों को उत्पन्न करने के पश्चात, भक्ति में आने के पश्चात, वो तथाकथित जो ब्राह्मण हैं उनसे श्रेष्ठ हैं वो. Then Prahlad says, Naivatmana prabhurayam nichalabha purno manam janad avirusha karuno vernite yad yajano bhagavate vidatita manam tachchatmane pratimukhasya yata shri. The Lord is nijalabha purna. He's completely satisfied in himself. भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, आत्मा राम है. He doesn't need anything from anyone. उनको किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. The Prabhupada said, Krishna doesn't need your rice, dal, and chapatis. तो भगवान श्री कृष्ण को दाल, चावल, चपाती हम लोग की नहीं चाहिए. The Prabhupada said. श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा. So the Lord is fully satisfied. So when we offer something,
in the material world, we offer something to someone as a kind of bribe, as a kind of flattery. But Krishna is fully satisfied in himself. He doesn't need anything that we might offer. तो भौतिक संसार में हम या तो किसी को रिश्वत देते हैं या किसी को संतुष्ट करने के लिए हम कुछ ऐसे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान तो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. Therefore, when we offer something to the Lord, by the Lord's mercy, it's actually the devotee who benefits. तो इसलिए जब भी हम कुछ भगवान को अर्पण करते हैं तो ये तो भगवान की कृपा से उस भक्त को लाभ मिलता है. And the example is given, Patimukasya yata mukashri. We decorate our face very nicely with tilak and, well, if you're a woman, then all sorts of decorations. Then when you look in the mirror, you see that your face is so nicely decorated. यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई अपने आप को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, वैष्णव श्रृंगार, जैसे भक्त तिलक लगाते हैं, माता जी लोग और भी श्रृंगार करती हैं, तो वो जब देखते हैं प्रतिबिंब में तो उनको बहुत सुंदर मुख दिखता है प्रतिबिंब में. So you don't have to say that now I decorated my face, so now let me decorate the face in the mirror. और तब हम नहीं कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को श्रृंगार किया तो मुझे दर्पण में भी श्रृंगार करना होगा. The face in the mirror is automatically decorated. क्योंकि अपने आप को श्रृंगार करने से दर्पण में हमारा प्रतिबिंब अपने आप सुंदर दिखता है. So when we glorify Krishna or serve Krishna, then we're automatically glorified. तो वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो स्वतः हम लोग का भी गुणगान हो जाता है. The living beings are parts of Krishna or little reflections of Krishna. So when we glorify Krishna, then we become glorious. तो हम लोग भगवान के बहुत तो जो है अंश हैं हम लोग उनके, तो इसलिए जब भगवान को हम गुणगान करते हैं तो हम भी साथ में हमारा भी गुणगान हो जाता है. The Lord doesn't need our service, it's for our own benefit. तो भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे स्वयं के लाभ हेतु है. Tasmad aham vigata viklava ishwarasya sarvatmana mahigranami yata manisham nicho jaya gunavisarga manu pravishta puyeta yena hipuman anuvarni tena. Therefore, vigata viklava, I'll give up all thought that of being unqualified. Despite my disqualifications, let me glorify Ishvara, the Supreme Personality of Godhead, Sarvatmana, wholeheartedly, in full surrender. Yes. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अब मुझे अपनी सभी अयोग्यताओं को त्याग करके और पूरे हृदय से मैं भगवान का गुणगान करने जा रहा हूँ. Then he says, Nicha Jaya Gunavisargam Anupravishta. Anyone who's entered into this material world, even if he's niche, lowborn, Puyeta Yena Ipuma Anuvarni Tena. He can be purified of all material influence simply by offering prayers to the Lord and hearing the glories of the Lord. तो कहते हैं कि अगर कोई नीच कुल में भी जन्म लेते हैं, लेकिन अगर वो भगवान का गुणगान सुनते हैं और उनको अर्पण करते हैं प्रार्थनाएं, तो उससे वो शुद्ध हो जाते हैं. Then sarve hyami vidhikaras tava sattvatamno brahmadayo vayamivesha nachod vijanta kshemaya bhutaya bhutatma sukhaya chasya vikriditam bhagavato ruchiravataraya. The sarvehi ami vidikara tava sattvadam. The
demigods like Brahma are all sincere servants of your lordship. So they're always on the transcendental position, sattva dhamna. Vayam iva isha nacha udvijanta. They're not like us, like Hiranyakashipu or like me. They're in the transcendental position. और यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा आदि जो देव हैं वो दिव्य स्तर पर स्थित हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप उनके परिवार में मैं जो कि आसुरिक परिवार में है, वो दिव्य स्तर पर स्थित। Yes. Kshemaya bhutaye uta atmasukhaya cha asya vikriditam bhagavata ruchiravatara. You come to protect the devotees. कहते हैं कि आप आते हैं भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए। And atmasukhaya, and for your own happiness, your own pleasure. और अपने स्वयं के आत्म सुख के लिए। And vikriditam bhagavata ruchiravatara. When you descend to this material world, your pastimes are very pleasing to everyone. और जब आप यहाँ पर आकर लीलाएं करते हैं तो वो बहुत आपकी लीलाएं आकर्षक होती हैं भक्तों के लिए। Tad yachcha manyum asarascha hatas tvayadya modeta sadhurapi vishrika sarpahatya lokascha nirvritim ita pratiyanti sarve rupam nrsinga vibhayaya jana smaranti. How you can give up your anger. और कहते हैं कि अब कृपा करके आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। Yachcha manyum asurascha hata atvayadya. Now the demon, now you've killed him, so now you can be peaceful. तो अब कह रहे हैं कि अब तो आपने उनका वध कर दिया हिरण्यकश्यप का, अब कृपा करके शांत हो जाइए। You can be pleased with yourself. और आप अपने आप में स्वयं आप प्रसन्न हो सकते हैं। Adhur, let's see. Modeta sadhur api vishrika sarpahatya. That even a saintly person is pleased when a snake or a scorpion is killed. तो यहाँ पर बताया गया कि साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं जब एक बिच्छू या सर्प को मारा जाता है। Sadhu is well known. Sadhu doesn't want to harm anyone. तो साधु तो जाने जाते हैं कि किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। The devotee has the quality of non-violence. क्योंकि भक्तों का जो गुण है वो अहिंसा है। When Hunter became a devotee, he didn't even want to step on an ant. I'm sorry, Maharaj, I lost the... When a hunter became a devotee by the grace of Nard Muni, the hunter no longer was willing to even step on an ant. हाँ, तो जैसे वो पशु का वध करने वाले जो शिकारी थे, जब वो नारद मुनि के द्वारा उत्साहित होकर भक्त बन गए तो उनको फिर कोई उसमें बिल्कुल जो मारने की क्षमता थी सब खो बैठे वो। But Srila Prabhupada cites one incident from his own life that he was visiting the Gaudiya Math and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was there and a snake was found in the temple. श्री प्रभुपाद जी अपने जीवन से घटना बताते हैं कि एक बार वो गौड़ी मठ में थे तो उन्होंने देखा कि उनके उस समय श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज वहां पर उपस्थित थे, तो उस समय वहां से एक सर्प जा रहा था। So
the devotees asked Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Guru Maharaj, the snake is there, what should we do? And he said, kill it. तो एक भक्त ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से कि गुरु महाराज एक सर्प यहाँ पर है, क्या करें? तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसको मार दो. So the snake was being chased, and Prabhupada saw that the snake was in great fear, and finally it was killed. और श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष ये हुआ कि वो सर्प को पकड़ करके वो भाग रहा था और भयभीत था और उनको भक्तों ने मार दिया. So Srila Prabhupada said that I was perplexed that Guru Maharaj is a saintly person, sadhu. Why is he having them kill the snake? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं थोड़ा भ्रमित हो गया कि मेरे गुरु महाराज तो एक साधु हैं, तो क्यों वो सर्प को मारने का आदेश दिए? So he said, but then some years later, I think, he saw this verse from Srimad Bhagavatam, and his question was answered. He was satisfied. और तब प्रभुपाद जी ने बताया कि कुछ समय के पश्चात उन्होंने फिर ये श्लोक उनको मिला श्रीमद् भागवतम में, तो वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि मेरे गुरु महाराज ने ठीक किया था. Even a saintly person is pleased when a snake or a scorpion is killed. तो एक साधु व्यक्ति भी प्रसन्न होते हैं जब बिच्छू और सर्प जैसे जो विषैले जंतु का वध किया जाता है. Because the snake or the scorpion will sting, bite, or sting without provocation, even an innocent person. So the Jews are pleased when such poison entities are killed. क्योंकि सर्प और ये कभी-कभी मासूम लोग को भी बिना किसी कारण के उनके अंदर वो प्रवृत्ति है विष काटने की, तो इसके लिए ऐसे जंतु को मारना चाहिए. And Prabhupada used to quote Chanakya that the snake is krura, is cruel, but the man whose senses are uncontrolled is more cruel, and he's more dangerous because the serpent can be controlled by mantras, but the materialistic demonic person who's cruel and envious can't be controlled by any means. तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि सर्प तो क्रूर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, ऐसे लोग उससे भी ज्यादा क्रूर होते हैं, क्योंकि सर्पों को तो मंत्रों से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग को नियंत्रित नहीं कर सकते. So now he says, Rupam Nrsinga Vibhapayaya Janasmaranti. You've performed such wonderful activities. You've performed such an extraordinary pastime by killing Hiranyakashipu. So everyone will remember this. वो कहते हैं कि आपने बहुत अद्भुत ये लीला की है जो हिरण्यकशिपु का वध किया है, और सब लोग इसको स्मरण करेंगे. The devotees, when in danger, remember the form of Lord Nrsingadev. भक्त लोग जब भी किसी भय की अवस्था में होते हैं तो नरसिंहदेव भगवान के रूप को स्मरण करते हैं. And now that Hiranyakashipu was killed, all the devotees were very pleased. The saintly persons were pleased. और अब जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया है तो सभी भक्त वहां पर उपस्थित सभी जो साधु हैं वो सभी प्रसन्न हो रहे हैं. Prahlad, you don't have to be angry anymore. You can assume you can be satisfied. और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अब कृपा करके आप और क्रोधित मत होइए, अब आप संतुष्ट होकर आत्म प्रसन्न हो जाइए. This is Prahlad Maharaj's example. Shravanam Kirtanam Vishnu Sparanam is particularly the exemplar of
remembering the personality of Godhead. तो श्री प्रहलाद महाराज जिन्होंने वो नवधा भक्ति बताई है उसमें वो स्मरण का उदाहरण बता रहे हैं, स्मरण के उदाहरण है of devotional service, and Prahlad Maharaj shows us especially how to remember Krishna, smarana. तो इस नवविधा भक्ति में प्रहलाद महाराज दर्शाते हैं कैसे स्मरण करना चाहिए भगवान का. And by remembering Krishna, one becomes free from all fear. और भगवान कृष्ण को स्मरण करने से सभी भय से अभय निर्भय हो सकते हैं. All right, we have 15 minutes left. Maybe I should stop here and see what kind of comments or questions you might have. तो महाराज यहाँ पर विराम देंगे. अभी 15 मिनट का समय है. किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अगर है तो हम पूछ सकते हैं. हमारे पास अच्छा अवसर है. रणछोड़ कृष्ण प्रभु, raise your hand. No, Prabhuji, I raise. Okay. No question. All right. Maharaj, it was very nicely explained everything, Maharaj, and everybody enjoyed, Maharaj, and learned so many things. So should we read a verse then? Yes, Maharaj, please. Aham bipemya jatate tibhayana tasya vivarka netra brukuti rabasogradang strat antra sraja shataja keshara shankukarnan irada pita digipad paripin nakagrat. I'm not afraid of your terrible features. Naham bipemi, I'm not afraid. Ajita, oh victorious Lord. Bhayanaka asya, I'm not afraid of your fearful mouth. Viva, your terrible tongue. Arka netra, your shining eyes. Bhrukuti, your frowning eyebrows. Rapasugradang strat, your ferocious teeth. Antrasaja, your garland of gut, garland of intestines. Shataja keshara, kunarkarnat, by your bloody mane. Wedge-like ears, or irada, your fierce roaring. Gita, deep heart. Adi. Your roaring is so ferocious that the even great elephants are afraid of your roaring. And Adipit, Nakagrat, and your nails which have torn apart your enemy. I'm not afraid of any of this. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ भगवान. आपके इस प्रकार के जो लग रहा है सबको कि भयावह रूप है, आपकी भकुटी, आपके जो नाखून हैं, या आपने जो अतड़ियों की माला पहन रखी है, आप जो गरज रहे हैं बिल्कुल शेर के जैसे, और तो इन सभी से मैं भयभीत नहीं हो रहा हूँ. The demigods were afraid. देवतागण भयभीत थे. Lord may have come for their benefit, but he was so fierce. He was so roaring so ferociously, and they were afraid. तो हालांकि भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आए थे, उनके लाभ हेतु, लेकिन उनके इस रूप को देखकर देवता भी भयभीत थे. But the Prastosnyaham
Kripana Vatsala Dusahogra Sangsara Chakra Karanad Grasatam Pranita Advas Parmabir Ushattama Tangri Mulam Prito Arga Sharanam Payasikadanu. Kripana Vatsala, you're very fallen souls. And as the result of my previous activities, I've been placed into this material world. Sangsara Chakra, Karana, Grasatam, Pranit, a place where, among other conditioned souls who devour one another, Grasatam, this is the material world, dog. तो कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्व कर्मों की वजह से किस प्रकार से ऐसे संसार में फंसा हूँ और इस प्रकार की पतित अवस्था। आप तो कृपण वत्सल हैं, लेकिन इस प्रकार संसार चक्र में जहाँ पर महाराज इस प्रकार से जैसे कुत्ते जैसी प्रवृत्ति लोगों की है, और ऐसे स्थान पर मैं यहाँ पर हूँ। But I can't. Sorry, but he says that I've been put into the association of these materialists. I can't blame them. It's because of my own sinful activities. और वो कह रहे हैं कि सॉरी मान Go ahead. वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों के, ऐसे भौतिकवादी लोगों के संग में हूँ, लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये मैं अपने पूर्ववर्ती विगत जो कर्मों के दुष्परिणाम है, उसकी वजह से मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है। And my fears of this material world, my fears of continuing in this cycle of birth and death, disease and old age, and forgetfulness of the real business of life. और इस संसार में जो मैं देख रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और विस्मृति, इससे मैं भयभीत। So when will that moment come when you will call me to the shelter of your lotus feet, your goal for liberation from conditioned life? और कब वो समय आएगा, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप मुझे अपने पास बुलाएंगे। वो मुक्त जीवन जो इस बंधन से मुक्ति मुझे मिल जाएगी। So these are some of the Prahlad Maharaj. They go on for quite some time. We've only touched the surface of them. तो ये कई ऐसे बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज की, हम लोगों ने खाली सतह से कुछ प्रार्थनाओं को स्पर्श किया है। Sorry Maharaj, your voice is But each prayer has so much meaning. लेकिन ये प्रार्थनाओं का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है और मतलब इनका अर्थ है हमारे जीवन में। Okay. So I think we can stop here. Would someone like to lead kirtan for a few minutes? Okay, Maharaj, if you allow, Maharaj, can we take a question, Maharaj? Oh, you have a question? Okay. Maharaj, as we hear, Maharaj, that Chaitanya Mahaprabhu also used to hear this Prahlad Charitra and Dhruva Charitra. So Maharaj, what is that aspect from Prahlad Maharaj and his prayers and his character, which being a practitioner we can take Maharaj and into our life? Everything. Okay. Why one thing? Everything. Okay, Maharaj. तो प्रश्न ये था महाराज से कि हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद महाराज के चरित्र को बार बार सुनते थे, तो और ध्रुव महाराज के चरित्र को, तो प्रहलाद महाराज के चरित्र से हम लोग कौन सी ऐसी चीज है साधक भक्तों के रूप में हम लोग जो उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं? तो महाराज का उत्तर है कि सभी कुछ. We selected something to talk about today, but there's so much in the history of Prahlad Maharaj.
तो आज हम लोगों ने कुछ विषय वस्तु पर चर्चा की है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ है. Learn from Prahlad. I'm sorry, Maharaj, your voice is distracted, Maharaj. There's so much to learn from Prahlad. तो प्रहलाद महाराज से हमको हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए है. In the beginning of the chapter, he's instructing his friends, Komara atre pragya dharman bhagavataniha. In the very beginning of life, one should conscious be trained in Bhagavad Dharma. तो प्रहलाद महाराज बचपन से जैसे अपने मित्रों के साथ में वो उनको उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से बाल्यकाल से ही हमको भागवत धर्म में रुचि लेनी चाहिए. Not in IT or technology, but Dharma. तो आईटी में या फिर इस प्रकार की जो तकनीकी शिक्षा है उसमें नहीं, बल्कि धर्म में. Similarly, he instructs his friends about the illusion of family life. और तब वो अपने मित्रों से वो ये भी चर्चा करते हैं कि कैसे जो पारिवारिक जीवन का जो भ्रम है वो क्या है. And the attachments that develop in family life in terms of the material world. और आसक्ति जो लोग उत्पन्न करते हैं, विकसित करते हैं इस जीवन में परिवार के साथ में. And so many other topics. So the whole Prahlad Charitra is worthy of studying and learning from. तो इसीलिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, और पूरा प्रहलाद का जो चरित्र है श्रीमद् भागवतम में हमको बार बार श्रवण करना चाहिए. Not just that we go to Ras Leela, that's the real thing. No. तो ऐसा नहीं कि हमें रासलीला में जाना चाहिए, वही वास्तविक चीज है, नहीं. Hear about Prahlad Maharaj. तो हमको प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण करना चाहिए. Maharaj, there's one more question. Rishi Kumar Prabhu, you can unmute yourself and ask. Hare Krishna Maharaj, Danu Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, Maharaj, my question is: there are many people who were instructed by Narad Muni, but we see Prahlad Maharaj is the one who is the most exalted of all the people who were instructed. So, what qualities of Prahlad Maharaj make him like that? तो प्रश्न है कि नारद मुनि ने बहुत लोग को प्रचार किया, हम देखते हैं बहुत लोग को उपदेश दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज उन सभी से में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं. तो ऐसा क्या गुण था उनके अंदर कि वो सर्वश्रेष्ठ बने? I was reading some exchange where my godbrother Vishnu Jan Swami said to Srila Prabhupada that you give me so much mercy, why me? तो महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने एक गुरु भाई विष्णु परम पूजनीय विष्णु स्वामी महाराज के से सुन रहा था. वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने, वो बोल रहे थे कि आपने मुझे इतनी कृपा की है मेरे ऊपर, क्यों मेरे ऊपर की आप इतनी कृपा? Prabhupada, I give my mercy everywhere, but you take it. प्रभुपाद जी कहा कि मैं तो सबको अपनी कृपा देता हूं, लेकिन आपने इसको ग्रहण किया है. Apart from that, he's extraordinary. It's not just like a mathematical puzzle, 4 parts this and 2 parts that, and you add 6 parts of this. He's extraordinary. और इसके साथ में वो असाधारण हैं. ऐसा नहीं कि जैसे हम गणित में सीखते हैं कि 2 और ये 2 भाग होते हैं, मिला के 6 भाग, ऐसे नहीं, वो असाधारण बालक थे. We can't just follow a formula and become Prahlad Maharaj. He's Prahlad Maharaj. तो हम लोग इस प्रकार से पालन करके प्रहलाद महाराज नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज हैं, विशेष हैं वो. Follow it. I'm sorry Maharaj, again I lost your voice Maharaj. We can follow his example. हाँ, लेकिन हमको उनके उदाहरण को अपने जीवन में अपना सकते हैं. All right, we can stop here. Maharaj, there's one last question in the chat box, Maharaj. With your permission, can we take this?
Maharaj, question is, there are several avatars of the Lord like the Yuga avatar who periodically appear in various parts of the universe. Does Lord Narasimha also appear like this to perform pastime? I'm sorry, tell me again. There are many incarnations of the Lord. Several avatars of the Lord, like the Yuga avatar, who periodically appear in various parts of the universe. Does Lord Narasimha also appear like this to perform pastime? Oh yes. All of the incarnations. तो प्रश्न ये था कि क्या भगवान के जो अवतार हैं, सभी अवतार जैसे लीलाएं करते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, वैसे ही नरसिंह भगवान भी करते हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया हाँ. The example is given how the sun is moving and it's appearing in different parts of the sky. Someplace it's 10 o'clock, someplace 12 o'clock, sometimes 2 o'clock. But it's the same sun. जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे सूर्य होता है, वो अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार से, कभी 2 बजे, कभी 10 बजे, कभी इस प्रकार से वो चमकता रहता है. Oh, somewhere Nrsimhadev is fighting with Hiranyakashipu, and in the next universe he's killed Hiranyakashipu. तो कहीं कहीं पर वो युद्ध कर रहे हैं और कहीं दूसरे ब्रह्मांड में वो उनका वध कर रहे हैं. And in another universe the demigods were offering their prayers. और दूसरे ब्रह्मांड में जो देवतागण हैं वो उनको प्रार्थना कर रहे हैं. And in the next universe Prahlad Maharaj is offering prayers. और कहीं और पर किसी और ब्रह्मांड में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं. And in another universe the Lord is replying to Prahlad. और किसी और ब्रह्मांड में जो भगवान हैं वो प्रहलाद महाराज के उनको उत्तर दे रहे हैं. I'm simplifying it, this, but actually it's going on like that, universe after universe. As soon as one aspect of Lord Nrsimhadev's pastimes is completed here, it's starting in the next universe. तो महाराज हमें साधारण भाषा में बता रहे हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं महाराज की अलग अलग ब्रह्मांडों में जैसे यहाँ पर समाप्त होती लीला, किसी और ब्रह्मांड में वो शुरू होती है. Therefore it's called Nitya Leela. इसीलिए इनको नित्य लीला कहा जाता है. Thank you, Maharaj. All right. So we can stop here, I think. Thank you. Thank you so much. We are very, very grateful to you, Maharaj, for your association. And very auspicious day. We were blessed to hear from you, Maharaj. When we hear from you,